After doing sequencing, now we'll talk about assignment. Assignment problems are a very special type of quantitative techniques problem or linear programming problem. It deals with allocating various resources on a one-to-one basis It deals with allocating various resources to various activities on a one-to-one basis so as to get optimized result. So basically assignment problem is when you have various resources and each resources can do various activities. But at a time, every resource will be given only one activity and every resource take different time to complete that activity. It can be different time or cost or whatever. And our objective is to do the assignment in such a way, assign the activities to the resource in such a way that the cost or the time is minimized. Basically, it deals with an economic problem where resources are many and they have alternative uses. But here we'll again define it that even though there are alternative uses, at a time each resource can only do one use or it can only do one activity. Okay. And the number of activity are equal to the number of resources. So here we'll talk about some basic assumptions of assignment problem. And the basic assumptions of assignment problem are the resources are equal to the activities. That is, the number of resources and the number of activities or the task are same. Second is every resource can do each activity. Then the third is at a given time, each resource can do only one activity. The time cost, the fourth is the time cost required to do each activity by each resource is different. Now it is very important that the resource and activity should be same. If they are same, only then, if they are equal, only then it is called as balanced assignment problem.
Otherwise it is called as unbalanced assignment problem. So whenever we are solving this assignment, we have to consider all these assumptions. So basically, assignment problem is nothing but it's an economic problem or a short-term solution for the economic problem. You have various activities, you have various resources to do the activities. But every resource take different time to complete the activities, and we have to assign the jobs to the resources in such a way that the time or the cost involved is minimized. So it is basically a minimization technique. So assignment is nothing but a minimization technique. And we have to, after taking these assumptions into consideration, then we have to solve the sums on assignment. So obviously we'll be given a matrix where there will be n jobs and n resources. And we have to assign each task to each resource. But how we should do it, that is the assignment method. The method with the help of which we solve this problem of assignment is called as Hungarian method. We use Hungarian method to solve the assignment problems. Hungarian method of solving assignment problem only talks about the minimization techniques and not the maximization one. Once we'll first learn how to solve a basic assignment problem, और जब वो हम लोग सीख लेंगे तो हम लोग स्पेशल केसेस ऑफ असाइनमेंट को ले लेंगे. इसमें 4 स्पेशल केस होते हैं. एक मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, फिर होता है अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन. हमें अगर बेसिक असाइनमेंट का सम कैसे सॉल्व करना है ये आ जाता है तो उसके बाद हम ये बाकी सारे केसेस देख सकते हैं. So to understand the basic assignment problem, let us take a sum from exercise 7.1 का ये first sum है. I'm solving this sum तो आपको बेसिक असाइनमेंट का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा. उन्होंने दिए हैं जॉब्स और उन्होंने आपको दिए हैं मशीन्स. जॉब है A, B, C, D and the machines are 1, 2, 3, 4. Now because the machines and jobs are same, it is called as balanced assignment problem. और इस टेबल में उन्होंने आपको प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया है. हर जॉब को हर मशीन में प्रोसेस करने का जो कॉस्ट है वो उन्होंने दिया है. तो ये इस तरह का मैट्रिक्स वो आपको दे देते हैं क्योंकि टाइमिंग और या आर्स है या कॉस्ट है जो भी है वो आपको पता तो नहीं होगा. Now how to solve this sum? The first step is see if the sum is balanced. It is a balanced problem because the jobs and machines are same. अब हमें इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप इज हर रो का एक लोएस्ट एलिमेंट में सर्कल करो. ये लोएस्ट है, इधर ये लोएस्ट है, दिस इज लोएस्ट, this is lowest. Now you will subtract this lowest element from all other elements. So I'll have a new matrix. It will be A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. So I'll say 31 minus 25 is 6, 0, 8, 4.
then this is 4, 3, 2, 0, then this is 0, 2, 4, 5, and this is 4, 2, 0, 6. Now you will check if we have 0 in every row, and then you will check if you have 0 in every column. Yes, we have 0 in each row and we have 0 in each column. Now we'll try to cover these zeros with minimum lines covering maximum zeros. तो अगर मैंने इसे कवर कर लिया 1, 2, 3, 4, तो ये नंबर ऑफ लाइन्स तो ये नंबर ऑफ लाइन्स और ये नंबर ऑफ columns is equal to the machines and the jobs. ये 4 है, ये भी 4 है. तो अब हम लोगों को ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो मिल गया है, क्योंकि हम लोग ये जो मिनिमम लाइंस निकालेंगे to cover the maximum zeros, they should be equal to the jobs and resources and the activities. If they are equal, then we have got the optimal solution. If not, then we have not got the optimal solution. Now what I'll do is, I've written all the matrix as it is and I've marked all the zeros. And now we'll start assigning. अगर मैं जॉब ए को मशीन में देखूं तो जॉब ए का मशीन 2 में सिर्फ एक 0 है. जॉब बी का मशीन 4 में सिर्फ एक 0 है. जॉब सी का मशीन 1 में सिर्फ एक 0 है और जॉब डी का मशीन 3 में सिर्फ एक 0 है. तो हम लोगों ने उन्हें वही असाइन किए हैं जहां उनका 0 है. अगर यहाँ पे कहीं टाई हो जाता तो हम लोग उस हिसाब से उसे देखते. तो अगर मेरा असाइनमेंट देखा जाए तो ये A2, B4, C1 और DR आ रहा है. तो हम लोग इसके ओरिजिनल कॉस्ट देख लेंगे. A का 2, 25 कॉस्ट है ये प्रोसेसिंग. B का 4, 21, C का 1, 19 और D का 3, 34. If we add them, the total will be 99. It means that we have taken total 99. So the total processing cost is 99. This is a simple assignment problem. Steps were very simple. पहले हर रो का लोएस्ट एलिमेंट को काउंट करो, उसे बाकी के रो से उसे माइनस करो. फिर देखो कि हर रो में 0 है क्या, हर कॉलम में 0 है क्या. अगर कॉलम में भी 0 है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो उसका भी लोएस्ट निकालो, subtract it. So you will get 0 in every row and every column. Then you will draw the minimum lines which are covering maximum zeros, but
this minimum lines covering maximum zeros are equal to the jobs and the machines, or resources and the activities. Then you will mark all the zeros and then you will put them in the total. Then you will mark all the zeros and start assigning. तो जो जॉब में जहां पे जीरो है उसे उधर असाइन करना है. So the assignment is completed. Put the processing cost, and the total cost is your lowest processing cost. Similarly, let us take one more sum. Now, plant manager has 4 subordinates and there are 4 tasks. So there are 4 workers and 4 tasks. It is A, B, C, D. It is 1, 2, 3, 4. So this is your processing time, and you have to reduce this time or minimize this total time. Now again, what I'll do is I'll mark the lowest possible in each row. So this is 7. Here it is 3. Here it is 14. Here it is 9. It is 0, 18, 19, and 3. Then here it will be 9, 24, 0, 22. Then it is 23, 4, 3, 0. And it is 9, 16, 14, 0. So there are 0 in each row, but there are no 0 in each column. तो हम लोग हर कॉलम का 0 निकालने के लिए वापस हर कॉलम में लोएस्ट एलिमेंट को मार्क करेंगे and we will subtract it from the others. So we'll subtract every element from it. Now see, in the first row, first column, 0 ही लोएस्ट है तो वो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड कॉलम में 4 लोएस्ट है तो ये होगा 14, 20, 0, 12. यहाँ पे 0 ही लोएस्ट है तो यहाँ पे रहेगा 19, 0, 3, 14. यहाँ पे भी 0 ही लोएस्ट है तो 3, 22, 0, 0. So now you have 0 in each row and each column, and we'll try to draw the minimum lines to cover the maximum zeros. So it is 1, 2, 3, and 4. Anyhow you do it, you can do it only in this way. So we are getting 4 lines, which is equal to the task and the employees. And thus, it will be 0, 14, 19, 3, 9, 23, 9, 20, 0, 12, 0, 3, 14, 22, 0, 0. So we'll have to cross the zeros. All zeros I'll cross. Now see, A is having
0 in 1 and 1 is having 0 only in A. So I will straight away assign A को मैंने 1 दे दिया क्योंकि एक ही 0 है वहां पे। अब वैसे B का बस 3 में ही 0 है तो B को हम लोग 3 दे देंगे। टास्क C और D बचे। अब C को 0 है 2 और 4 में, लेकिन D को बस 4 में ही 0 है और 2 को और किसी में भी 0 नहीं है, तो C को चला जाएगा टास्क 2 और D को चला जाएगा टास्क 4। तो A को 1 गया 7, B को गया 3, that is 3, C को गया है 2, that is 18, and D is 4, that is 9. If we add them, this is 10. It is 7, 3, 18, 9. The total is 37 hours. And this is the minimum possible time in which the given task can be completed. It's very, very easy here. क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप्स फॉलो किए। मैंने पहले रो का लोएस्ट निकाला, माइनस किया, फिर हर रो में 0 था, हर कॉलम में 0 नहीं था, इसलिए उसमें लोएस्ट निकाला, माइनस किया, तो हर कॉलम में 0 आ गया। तो अब हम लोगों ने मिनिमम लाइंस निकाली टू कन्वर्ट मैक्सिमम जीरोस विच आर 4, तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। फिर हम लोगों ने इसको लिख दिया है। नाउ वी विल मार्क द जीरोस। और उस हिसाब से हम लोगों ने असाइनमेंट कर दिया। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट। दिस इज हाउ वी डू अ सिंपल असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब कभी कभी क्या हो जाता है इसमें कि एक ही बार में अगर आप ये लाइंस निकालो तो कोई जरूरी नहीं है कि दे विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टास्क एंड जॉब्स। तो तब हमको थोड़ा एक अलग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है।